Good evening, everyone, and welcome to the today's session of Saturday Talk by JanyuTech. Today, we once again have Dilip Sharma ji for today's talk. A brief introduction of Dilip ji. Dilip ji has done his master's in chemistry. He has been working with SEC Cement for 32 years at various locations and various positions. When he left SEC, he was working there as a GM production. Thereafter, he worked with Imami Cement Nuvoco for 4 years as senior vice president and with KJS Cement for a year as a manufacturing head. With total 37 years of experience in cement manufacturing, he is now executing end-to-end cement plant projects and offering his consultancy services. He is also helping JanyuTech in our cement automation division projects. Today, he is going to speak on future technologies in construction engineering. Over to you, Dilip sir. Thank you so much. So once again, good evening, everybody. Good evening. This topic is a very important topic for the coming time, where the time and cost are going to play a very significant role. So before we start, I would request you to play that video first. स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज इंडिया में। दोस्तों, घर बनाने के लिए कैसी कैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज अपना रहे हैं दुनिया के कई बड़े देश, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये बात तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, घर बनाने में कई महीनों का वक्त लग जाता है और कुछ घरों को बनाने में साल भी लग जाते हैं, जिंदगी भर की कमाई लग जाती है। दोस्तों, अगर आज आप ऑर्डर दें और कल रहने के लिए आपका घर तैयार हो जाए तो कैसा रहेगा? जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है। भारत में तो नहीं फिलहाल के लिए, लेकिन यूएसए में ये पॉसिबल है, क्योंकि यूएसए की एक कंपनी ये कमाल कर रही है और 24 घंटे से भी कम वक्त में कस्टमर्स के ऑर्डर्स पर उनका पसंदीदा घर बनाकर डिलीवर कर रही है। दोस्तों, ये कमाल है 3D प्रिंटिंग का। अब ये कौन सी टेक्नोलॉजी है तो इसी वीडियो में डिटेल में आपको आगे पता चलेगा ही, और साथ ही में घर बनाने की कई और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के बारे में आप इसी वीडियो में जानोगे। तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। नंबर 5, स्पाइडर XK8। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल घर बनाने के वक्त किया जाता है। ये एक तरह का थर्माकोल होता है जिसके ऊपर स्पाइडर मकड़ी के जाले जैसा स्ट्रक्चर बना होता है। घर बनाते वक्त इस थर्माकोल के स्ट्रक्चर को दीवारों के ऊपर लगा दिया जाता है। आखिर काम क्या करता है ये, चलिए ये समझते हैं। तो ठंड के वक्त ठंडी से और गर्मी के वक्त गर्मी से बचाती है ये टेक्नोलॉजी। सबसे पहले इसे दीवारों पर रखा जाता है और फिर लोहे के जालीदार शीट्स की मदद से दीवारों पर फिट किया जाता है, ताकि थर्माकोल की शीट्स अपनी जगह से हिले ना, और फिर इसके ऊपर सीमेंट की लेयर लगाई जा सकती है। तो दोस्तों, स्पाइडर XK8 हमारे देश में तो शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में इतने सारे एसीज चलते हैं और उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होता है, वो तो अलग से, जिससे ओजोन लेयर को नुकसान होता है, और ऊपर से बिजली के बिल, जिससे हमारे देश की जनता वैसे ही परेशान है, क्योंकि गर्मी के दिनों में गर्मी बहुत पड़ती है भारत में। अगर ये स्पाइडर XK8 की थर्माकोल शीट्स हमारे घरों में लगा दी जाए तो गर्मी के वक्त कमरे बहुत कम गर्म होंगे, जिससे पंखा और एसी कम चलेगा, जिससे सबका फायदा होगा। नंबर 4, 3D प्रिंटिंग। दोस्तों, कैसा होगा अगर आप अपनी पसंद का घर का डिजाइन चुने और वो केवल 24 घंटे में बनकर तैयार हो जाए। सुनने में यह बात किसी चमत्कार से कम नहीं लगती है, लेकिन 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से यूएसए की एक टेक्नोलॉजी कंपनी ऐसा कर रही है। दरअसल 3D होम प्रिंटर एक हाई टेक्नोलॉजी से लेस मशीन होती है। इस मशीन को रोबोट के जरिए ऑपरेट किया जाता है। इस मशीन को कंप्यूटर के जरिए जोड़ना होता है, फिर कंप्यूटर पर घर का 3D डिजाइन बनाना होता है, अपलोड करना पड़ता है। इसके बाद कंप्यूटर से मशीन को कमांड दिया जाता है। प्रिंट करने से पहले मटेरियल्स को मशीन्स में फीड करना होता है। 3D होम प्रिंटर का प्रोसेस छोटे छोटे स्लाइस के हजारों टुकड़ों से पूरा किया जाता है। जब मशीन से प्रिंट किया जाता है तो टुकड़े एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। ये सारे टुकड़े एक साथ जुड़कर एक सॉलिड हिस्से का रूप ले लेते हैं। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस का काम बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। प्रिंट के वक्त ही दीवार में पानी की पाइपलाइन और वायरिंग का काम भी पूरा हो जाता है। घर में इस्तेमाल होने वाली अलग अलग दीवारों, छत, विंडोज को बनाने का काम बारी बारी से किया जाता है। इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कंस्ट्रक्शन के कॉस्ट को काफी हद तक कम कर देती है। 3D प्रिंटर से घर बनाने में बिल्डिंग मटेरियल की कॉस्ट में 30 से 50% की बचत होती है, और टाइम में 50 से 70% की बचत होती है, और लेबर कॉस्ट में भी, क्योंकि लगभग सारा काम तो मशीनें ही कर रही है, और 50 से 80% तक लेबर कॉस्ट में भी कमी आ जाती है। और जहाँ तक कि सेफ्टी की बात है तो 3D प्रिंटर से बने घर पूरी तरह से सेफ माने गए हैं। इसकी वजह होती है कि घर बनाने से पहले
उसका डिजाइन कैड सॉफ्टवेयर के जरिए कंप्यूटर पर फीड कर दिया जाता है, इसलिए बिल्डिंग के बने हुए स्ट्रक्चर में कोई खामी नहीं होती। और अभी फिलहाल तो इस टेक्नोलॉजी में और डेवलपमेंट की जरूरत है, जो कि वक्त के साथ साथ ये टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा डेवलप होगी। नंबर 3, डिंसेल स्ट्रक्चरल वॉलिंग। डिंसेल स्ट्रक्चरल वॉलिंग एक परमानेंट फ्रेमवर्क सिस्टम है जिसे कंक्रीट से भरा जाता है, फिर वो एक ठोस दीवार बन जाता है। जी हाँ, देखिए, यहाँ दीवार खड़ी करने के लिए किसी भी तरह के ईंट या पिलर की जरूरत नहीं होती है। बस इन स्ट्रक्चरल फ्रेम्स को घर के आकार और साइज के अकॉर्डिंग खड़ा कर दिया जाता है और फिर इसमें कुछ इस तरह से मिक्स कंक्रीट को भरा जाता है और जब ये सूख कर अपना आकार ले लेता है तो फिर इन फ्रेम्स को हटा दिया जाता है। इसकी खासियत ये है कि इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बिल्डिंग को बनाने में वक्त कम लगता है, तो वहीं खर्च भी कम आता है, क्योंकि इन फ्रेम्स को एक जगह से दूसरी जगह तक लाने में भी किसी क्रेन या बड़ी गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बता दें कि इस टेक्नोलॉजी को यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी ने अप्रूवल दे दिया है और दुनिया के कई देश इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर भी रहे हैं। बताया जाता है कि डिंसेल स्ट्रक्चरल से बनी हुई बिल्डिंग्स 9 मैग्नीट्यूड तक के अर्थक्वेक, भूकंप को भी झेल सकती है और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को 5 गुना तक कम कर सकता है। फिर तो ये टेक्नोलॉजी भारत में भी जरूर इस्तेमाल की जानी चाहिए। तो आखिर कब आएगा वो वक्त जब भारत में इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। नंबर 2, फ्यूचर स्मार्ट होम्स। दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा कि आखिर दीवारों के भी कान होते हैं। अब भले ही ये बात मुहावरे के रूप में कही जाती आ रही है, लेकिन दोस्तों भविष्य में ये मुमकिन हो जाएगा। यूएसए में साइंटिस्ट ऐसे सिस्टम्स को बनाने पे काम कर रहे हैं जो एक नॉर्मल घर को स्मार्ट होम में तब्दील कर सके। अभी भी हाल फिलहाल में कुछ गैजेट्स हैं जो लगभग एक नॉर्मल घर को स्मार्ट होम में तब्दील कर देते हैं, जैसे कि एलेक्सा और भी दूसरे कुछ सॉफ्टवेयर्स है जो फीचर्स देते हैं स्मार्ट फीचर्स, जैसे कि फैन का लाइट्स का ऑटोमेटिकली ऑन होना ऑफ होना। लेकिन दोस्तों आने वाले वक्त में कंप्लीट स्मार्ट होम्स बनेंगे। स्मार्ट होम्स आपकी एक्टिविटीज के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। यह घरों की दीवारों में लगे हिडन सेंसर से पॉसिबल हो पाएगा। इस टेक्नोलॉजी में सेंसर्स आपकी दीवार में और फ्लोर्स में लगाए जाएंगे ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, तो आपका घर पूरी तरह से ओरिजिनल स्मार्ट होम बन जाएगा। फ्यूचर स्मार्ट होम्स में लगने वाले सिस्टम को डेवलप करने वाली टीम केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स है। ये लोग ऐसे सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं किसी बिल्डिंग में रहने वाले लोगों और जानवरों के वाइब्रेशंस, साउंड से लेकर स्पेशल एक्टिविटीज और मोमेंट्स को रीड कर सके। रिसर्च के मुताबिक ये भी प्लानिंग है कि ये सिस्टम मौजूदा इलेक्ट्रिकल फील्ड्स में होने वाले किसी भी बदलाव को डिटेक्ट कर सके। हालांकि अभी स्मार्ट होम्स की टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से डेवलप होने में और अफोर्डेबल होने में काफी वक्त लगेगा। रिसर्चर्स का कहना है कि फ्यूचर स्मार्ट होम्स में कैमरास की जरूरत नहीं होगी। इनकी दीवारों में और फ्लोर्स में कुछ छुपे हिडन सेंसर्स होंगे, जिससे घर आपकी एक्टिविटीज के हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेगा, जो आपके बिना कहे आपको सुन सके। रिसर्चर्स का मानना है कि ये नया सिस्टम काफी मायनों में प्रॉफिटेबल होगा। इसका पहला फायदा बिल्डिंग के लिए एनर्जी एफिशिएंसी का होगा। मतलब आप रूम में हो तो अपने आप लाइट जल जाएगी, अगर आप नहीं हो तो लाइट बंद हो जाएगी। रूम को ये चीजें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। अगर घर में कोई नहीं होगा तो घर अपने आप इस चीज को सेंस कर लेगा और घर की जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, पंखा, लाइट, टेलीविजन, XYZ जितनी भी चीजें हैं, ऑटोमेटिकली सारी चीजें बंद हो जाएगी, जिससे हर किसी का पैसा बचेगा। और दूसरे केस में बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और सेफ्टी को ट्रैक किया जा सकता है, जिससे भूकंप और तूफान के केस में ये चीज काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में घर अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, घर अपने आप को लॉक कर लेगा। तो दोस्तों स्मार्ट होम ऐसा है कि आप घर से बाहर निकले तो घर ने अपने आप को लॉक कर लिया। अगर आपने दरवाजा बंद किया और आपको याद ही नहीं कि आपने कुंडी लगाई थी या नहीं लगाई थी, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं बाहर गए और आपको बिल्कुल भी याद नहीं कि आपने कुंडी लगाई थी या नहीं लगाई थी, आपका गीजर का बटन बंद था या नहीं बंद था, कहीं टीवी का बटन ऑन तो नहीं छोड़ दिया, या वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाले थे या नहीं निकाले थे, बंद किया भी था या नहीं किया था, तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल भी सोचनी नहीं पड़ेगी। ऐसे में स्मार्ट होम आपका ये सारा काम पूरी तरीके से कर देगा। ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल ये टेक्नोलॉजी डेवलपिंग फेज में है। एक तो इसे डेवलप होने में थोड़ा वक्त लगेगा, बहुत ज्यादा नहीं लगेगा लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। और दूसरी चीज, इसे अफोर्डेबल बनाने में कंस्ट्रक्शन के दौरान सेंसर्स वगैरह लगाना, इसको अफोर्डेबल, काफी किफायती बनाना पड़ेगा ताकि सभी लोग इसे इस्तेमाल कर सके। डेवलपिंग कंट्रीज वाले भी इस टेक्नोलॉजी को खरीद सके और अपने घरों को स्मार्ट बना सके। तो इस चीज में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। नंबर 1, टाइबॉट। टाइबॉट एक अमेरिकी रोबोट सिस्टम है जिसे स्पेशली कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि इस रोबो का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के लिए साल 2021 में किया गया था
फ्लोरिडा में एक ब्रिज बनाने के लिए एक दिन में 11,044 टाइल्स का इस्तेमाल किया जाना था और इसके लिए करीब एक घंटे में 1100 टाइल्स लगाए जाने थे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस काम को इस रोबोट ने बखूबी किया। जी हाँ दोस्तों, आप ये देख सकते हैं टाइबॉट रोबोट मैन्युफैक्चरर्स का ये दावा है कि ये रोबोट बहुत ही एक्यूरेसी के साथ अपने काम को पूरा करता है। आपको बता दें कि इस रोबोट को खरीदने की और रेंट पर लेने की दोनों भी फैसिलिटी मौजूद है। अब अगर ये टाइबॉट जैसा रोबोट अगर भारत में मैन्युफैक्चर कर लिया जाए मेक इन इंडिया के तहत, तो एक बात तो आपको पता ही है आजकल काम करवाने के लिए लेबर कितनी मुश्किल से मिलते हैं। सरकारी योजना के तहत काम करवाने के लिए भी लेबर्स ठीक से नहीं मिल पाते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में अगर ये टाइबॉट आ जाएगा तो वहाँ लेबर के बगैर तो लेबर की कॉस्ट बिल्कुल कम हो जाएगी। तो कम वक्त पे ज्यादा काम होगा, कम टाइम में जो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन होता है वो फास्ट हो जाएगा, जिससे सरकार ज्यादा डेवलपमेंट कर पाएगी जो कंस्ट्रक्शन सालों साल ले लेता है। दोस्तों ये सारी चीजें जो हमने आपको बताई ये ऑलरेडी अवेलेबल है। दोस्तों इन टेक्नोलॉजीज को भारत में इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बड़े लेवल पर एक पुश की जरूरत है जो कि बहुत जरूरी है। अगर आने वाले वक्त में भारत को सुपर पावर बनना है तो बेस्ट टेक्नोलॉजीज को जल्द से जल्द अडेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों इन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। So yeah, going ahead on this, in India, some people are using this prefab and what do you call that? Precast. Precast is already being used for bridge construction, and one building was constructed in Chandigarh in just 36 hours or so, and that was totally with the help of prefab structures. It was some, I think, 10 floors or so. So these things in the coming time, I think the conventional system of construction will no longer be there. Even today, if you look at in the cities, it is very difficult because the corporation doesn't allow you mixing sand and stone and cement on the roadside. So all these things, that's why these people, they are using that bulk this thing, concrete technology. There are concrete batching plants nearby, and they just come and pump it and go away. So already these things are there. I was just seeing these kind of things in videos. I want to see this one, which I wanted to share with you all because this is something more advanced. So here, one thing is true that more mechanization is going to come in coming days. Things are going to be more automated, and as he has shown about that smart homes, that itself is a total out-of-box concept. So now, yesterday I read one article that is actually IIT Indore, that civil department students and the professors, they have made a concrete without cement, which gives 80 MPa strength. There is something really fantastic. So when I saw the details, actually they have used GGBS. GGBS is granulated ground blast furnace slag, zero cement, and they are claiming that it gives a strength of 80 MPa. We were talking about only 40 MPa. This is 80 MPa. In fact, now this is very interesting, and I'm planning to visit them and discuss what is that. I have also done some experiments with slag, but this was something really fantastic, replacing totally cement and using only slag. Blast furnace slag does not set. If you mix it with water, the way cement sets and becomes solid. So that blast furnace slag does not have that property. So how come? And that's what is something interesting. Actually, when you grind it finer, it becomes more reactive. And probably these people, they must have used slag as well as fly ash, something kind of that kind. In fact, I have noted down that professor's name also, and I was looking for their numbers on the net. So I'll definitely visit them and see what is that actually. If that is really, if they can demonstrate it is a real successful thing, then there are a host of opportunities for this kind of a product. Building weight becomes half. The bridge weight becomes half, 80 MPa. Yeah. Actually speaking, the constituents of the slag is
molten byproduct of your blast furnace, and the constituents of slag is quite similar to the clinker, which is manufactured in cement plants. You see, slag cement standard allows us to add 70% slag in slag cement. So 5% gypsum and 25% clinker. So when you can replace almost 75%, then why not balance 25? This is what these guys have done actually. So that is what is very convincing, because the standard allows us 70% usage of slag in cement, and balance is 5% gypsum, so 75, only 25% clinker. So these people have eliminated that 25% of clinker also. Probably they must have definitely used gypsum, because gypsum helps in binding. What I think is they must have ground it very finer, maybe a nano particle size or what. Once if we get to see that, then only we can understand what they have done. So such things are really coming up, no doubt. And last time when we had a discussion on your concrete with air in it, see there what they have done, they are replacing almost 25-30% of the concrete with air. So some way or the other, people are trying to eliminate these costly and tedious things from construction industry. So here what I am saying is that since you people have been working on the robotics, so something can be done for such constructions, like that fixing of tie rods, and apart from that, even because in India we are doing construction with bricks, placing of bricks is also time consuming, and when it is done through labor, probably it's not that fast and not that accurate. And if it can be done with machine, it can be something better. So something like that can also be thought over in this. In cement kiln, the bricks which we are laying down inside the kiln, that is done with the help of a brick laying machine. There is a belt conveyor, and the labor only puts the bricks on the belt. The bricks are transported to the place where lining is going on. The machine holds it and puts it in the place, and then there is a hydraulic system, it tightens it, and then it goes on adding to the next one. And that's how actually that entire job, which earlier, I remember for even a small kiln, one shutdown used to take almost 18 days for laying the entire brick lining. And today we are able to do it in 4 to 5 days. Complete lining, 74 meter, 76 meter, with a dia of almost 6 meters. So this just gives some idea that something can be thought over into this construction field also, where you people have expertise in designing such systems. Any developments in the plastering system, sir? Abhimanyu here. That's also plastering also. Plastering also takes a lot of time now, sir. Any developments in that plastering area, sir? Yeah. I'll tell you this. I was just about to share with you. In our kilns also, in cooler section, we have to do this thing, plastering with a special type of material, which is actually both. It has binding also, and it is resistant to temperature. So earlier that job was also very time consuming, because you need masons, and masons also, how many? Each shift we used to hire 8 masons and 15-20 mazdoors for lifting and taking their material inside. But of late, the same job is being done with the help of gunning machine. There is one equipment, the water and all those things are poured into that. The cover is closed and the compressor is started, and the gun, one person with the gun is inside the cooler and cooler wall. He starts spraying that, and hardly in 2 shifts the complete cooler gunning job is over, and it doesn't fail also. I remember the manually done plaster used to pop up, and sometimes it used to collapse, but this gunning technology has made a huge difference. Once it is done, it lasts for even 2 years. Earlier, every 6 months we were stopping the kiln for attending this
a problem. So even plastering in commercial buildings, I don't know. It can be done with this. Probably somebody will have to observe and then make a precision. So of course, industry, you need a huge setup and you need more powerful this thing, because in domestic commercial market, I think small gunning equipment can be there, which can do that plastering job in couple of hours, maybe less than 3-4 hours. One full day, entire building plastering job can be finished. That can be also good area to work upon. So these, I think in the coming time, things are going to totally change. The construction industry is very slow to respond to changes. And it is probably the last. So if you can make, they are not changing from cement concrete structures to let's say steel structures, or they are not changing to factory produced items which can straight away be installed at the site. Nowadays, of course, there are some changes in the bridge making or flyover making where they use a lot of prefab. It's all cast somewhere, precast. So a lot of casting is done away, and then they are all that brought there, and there they use this PC strand, pre-stressed concrete strand, which is also contains, which is also one of the ingredients in the precast. So that is brought, and the cast. So at the site when they cast, they pull up those PC wire, and it kind of strengthens the whole structure. So other than that, there's not much of a change that the construction industry wants, unless it is highly proven and has been adopted. And bringing that technology also means that the people on the site have to be taught. So that is the slowest industry in my view. See, unfortunately, people who are in this industry, they are not very literate. Mostly they are contractors, local contractors and all that. But I'll tell you, I have used precast material for construction of our boundary wall at Baloda Bazaar. It is really fantastic, because had we done it manually with brick and all that, it would have taken at least 15 days. And actually, our directors were going to visit the plant, so I wanted to construct that fast. I sent one person to Raipur. He got the offer and all that. We immediately purchased that material, and within 3-4 days we could fix that wall. It's very easy to handle, and it is very easy to erect, and it is long lasting also. Normally the problem with any kind of wall is that if there is water retention somewhere near the wall, then slowly it deteriorates and the entire wall from that area collapses. But this material I have seen is much better, and it was cheaper than what we would have done by constructing wall with bricks. So these things people have started using now. I've seen in some other places also. While traveling, people are using this prefab walls and walls for boundaries. They are available in different sizes. If you want to make a high-rise wall, it is available in 2 parts also. And all you need in that case is a lifting machine like Hydra. Go on fixing it. And instead of full robotization like a 3D printing, if we pour the cement concrete from the ready-mix concrete onto the onto a slab caster, where the slab is being cast, there we put the kind of machine you showed in one of your videos just now. Yeah. So we do that kind of 3D printing with the robotic arm. Will it make slab casting faster? Slab casting can be faster, definitely, and it will. That is something we can produce. We can make that kind of robotic arm, which Yeah, they have shown in that. Yeah. Definitely, it will be faster, and the best thing is that the finishing, the quality of that construction will be superb. Because manually, all these things, they don't. They depend on the labor which is deployed, and the contractor. When it is done with the help of a machine, definitely it will be faster and better. So these binding agents, now we are talking about so many type of binding agents, the retarders or the enhancers of setting times. So there will be some chemical now. So we are talking about chemical binding.
And without the coarse rubbles or the aggregates, coarse and fine aggregates, can this slag be bound by a chemical agent so that it gives the required result for us? Is there a technology already? Slag actually, what I understand, what we have also done experiments with slag in our plant laboratory. Slag has to be ground finer to make it reactive. The slag which comes out as it is from the steel plant is not very reactive. So it has to be ground finer, and once you grind it finer, it becomes reactive. And of course, you will have to add aggregates and other things to make it more for bonding and getting that strength. Because slag itself, I have seen, if it is ground fine and then with some gypsum, it gives strength of than our normal standard cube, which is used for cement testing. It gives a strength of about 6 to 7 MPa in 7 days. I got it tested. Okay. Now maybe if we grind it further finer, we add some other activation chemicals. Probably what these IT guys have done, I don't know. Once I meet them, then only I will be able to understand what they are doing.